बड़ी और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है विटनेस्ड हनुमान लाइव, योगिनी शेयर्स अ पावरफुल ट्रू स्टोरी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I have a cricketer friend of mine. His name is KL Rahul. Yes. And we discuss sadhana a lot. And he's also got a very intense amount of bhakti towards Hanumanji. Like in Oh, his how life. beautiful. And he's got this one beautiful tattoo where it showcases a human being lifted by this really muscular arm. It's clearly that of Hanuman. Wow. Is it similar to what you're saying? Yes, it's similar. The maruts, I remember in the episode that we did in the first episode, we spoke little about maruts, So maruts are a very, very peculiar and intrinsic part of your pranic system. They are very, very, and very few people know and talk about this. The word Maruti in Hanuman has come out of the word Marut. Okay. Maruts are born to the Vayu's movement in the sun. When the process of creation happened, the movement of Vayu in the sun created maruts. These are particles that high velocity particles that come from other galaxies. All right. The word Maruti comes from Marut. The word Hanuman also comes from Marut. Han is like a bij akshar that has the meaning that something that strikes with great velocity. And man is huge and heavy and stable. So Hanuman word combination means something that moves with great velocity and can destroy anything which is huge and stable. All right. He was born to Kesari Nandan bolte hain. He was born to Kesari and Anjana Devi. Kesari means sun and Anjana Devi means the dark primordial Prakriti when nothing was born. Goosebumps all over. Right, go on. Hanuman is that force. And this quality actually of the maruts is present in all the deities. Especially a portal of Hanuman has happened because of the bhakti that people have, immense bhakti that people have done of Hanuman. Hanuman portal is there. He is a living deity and people have seen him. I met a girl very recently who had a lot of skin issues all over her body, and she was a 30-something, not married, and gone into a lot of, sadness in the body. And she went out for a corporate, meetup somewhere, and she was in that dukkha, and probably she had something with everyone, and she had a sakshat darshan of Hanuman. She saw Hanumanji in front of her, and that episode could have been a hallucination. I mean, anybody could have just taken it to be a hallucination. But that event changed her life completely. Number one, her entire body was changed. That whole skin issue that she had disappeared within a matter of 1 month. Her whole kayakalpa bolte hain. Everything changed. And she has become a devout bhakta of Hanuman. Devout bhakta who never ever went into any temple or believed in any gods and goddesses because of her own tormenting life. She has become a devout bhakta of Hanuman. So Hanuman darshan people have had, all the deities give darshan. How does the darshan happen, I mean, this is what my Gurudev taught me. Many people may not be in line with this thought, but he says that when a bhakta has become completely surrendered and dissolved in the deity is so happy. And when I say deity, ultimately it is consciousness and Paramatma. Paramatma is so happy that to please his eyes, a darshan is created. And who creates this darshan? The maruts in his body. The pranic particles in our body we have marut pavans. Every act of destruction in your body. Destruction means I am not talking negatively. The food is broken into. Food is broken into smaller particles, absorption is happening. So it's an act of destruction. Every act of destruction in our body which is required is done by the maruts. The prana does not have its own power other than the maruts. And when a person comes into bhakti, the maruts are maximized. And when the maruts are maximized, the soul itself has kripa over the bhakta and gives him the darshan of the deity he believes in. So people have seen
live Krishna, Shiva, those who are in bhakti have seen their deities in front of them. And this is the miracle of Paramatma, showering grace, and the maruts do it. So Maruti Bhagwan, talking about him, he is an immense portal of power. Perhaps this is why Hanumanji is linked to physical prowess. Yes, also all the siddhis are associated with him, and the physical powers in the sense he can become small like this much, he can become big like this much, he can become heavy like a mountain, he can be light as air, as a feather. All these siddhis come from they come from the maruts. This is what needs to be understood. They come from the maruts, and Hanuman being the deity for the marut pavans, they're called marut pavans. He's Vayu Putra. Vayu Putra means he's born to the Vayu, the movement of the Vayu in the sun. Okay, to kind of summarize what you said, I think you've given us the Sanatani version of what are we but stardust. Yes. So you're saying that according to Sanatan Dharma, there were high velocity particles that found their way near the atmosphere of the sun. These particles of light or energy particles are referred to as maruts. Yeah, they're born to the spandan of Shiva Shakti. You know, the S that you see in a yin and symbol, Yeah. the white and black is Yes. divided by a S Yeah. line, bright line. This bright line is where maruts are born. Rudra is also a synonym to this marut only. You know, when we say the power of Rudra, you see, it's also a product which is born to this spandan of Shiva and Shakti. From a very human perspective, everyone has heard the word pranayam, or increase the pran flowing through your body. Yes. So pran could be loosely understood to be external energy or energy that's present all around us. Energy, every kind of energy is prana. Number one. When we do pranayam, it's basically the life force energy inside us. We are bringing that into control. Yama means to bring it in control. So say you're doing the pranayam and the life force in you is increasing. Yes. Physical manifestation of that would be good skin, good hair, good health. Yeah. But you said something interesting. You said that it's the maruts that actually cause changes inside your body and not the prana. Yes, they are the soldiers in your prana. So what is the linkage between the prana and the maruts? The maruts are like, you could say, like floating particles on prana. They are the soldiers of the prana. And let's say, as you say, you know, in your blood there is hemoglobin. When your hemoglobin count is good, then you say your blood is good. In the same way, when the count of maruts, and which automatically goes the moment you start sadhana. That is how people are able to manifest anything out of the thin air. The yogis, you know, they manifest anything out of the thin air. All these siddhis, even Vaka Siddhi, you know, all these siddhis come because of the maruts. You're increasing the number of maruts in your body. In the body with the sadhana, automatically. Automatically. आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि अगर इससे पहले हम लोग देखें तो हनुमान वर्ड का जो मीनिंग है वो मतलब उसको मैंने काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। और अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि हमारी सबसे पहले तो भाई मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि बहुत ही एक लिमिटेड हमारी नॉलेज है और समझ है, तो ऑब्वियसली चीज़ें इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आती, बट विद टाइम जब आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से सुनते हो तो आपका नज़रिया काफ़ी बदलता है। आज की वीडियो में जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, जैसे उन्होंने हनुमान वर्ड, एक तो वो लिविंग डेटी हैं और डेफिनेटली जो भक्ति का पोर्टल है, इसलिए बोला जाता है कि जब आप उनको पुकारते हो तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट होते हो और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और दूसरा जैसे उन्होंने मारुत वर्ड का यूज़ किया, अभी क्योंकि मारुति वर्ड हनुमान जी का ही नाम है, ये हमें कुछ अरसा पहले ही, मतलब 1 महीना पहले शायद पता चला होगा जब हम लोगों ने वीडियो देखी थी कि मारुति जो गाड़ी है वो भी उन्हीं के नाम पर ही है। लेकिन मारुत को जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ मैं ये ही चीज़ समझ पाई हूँ कि जब हम लोग भक्ति करते हैं या हम लोग चैंट करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के आप कह लो कि उस तरह की एनर्जी फ़्लो करना शुरू हो जाती है और इस तरह के सोल्जर्स बनना शुरू हो जाते हैं कि जो हमारी चीज़ों को अलाइन करना शुरू कर देती है। और अगर हमारे अंदर
जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ख़त्म करके हमें स्ट्रॉन्ग करती है मेंटली और फिजिकली, क्योंकि वो एनर्जी जो फ्लो कर रही है उस भक्ति के थ्रू वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कह लो कि आर्मी का काम करना शुरू कर देती है। अच्छा, वैसे जो है ना, जब आप नाम जप जो है वो करते हैं तो आपको ये तो हकीकत है कि आपको एक उसकी आदत डालने में भी थोड़े दिन जो है वो लगते हैं। जब आपको आदत होना शुरू हो जाती है ना, तो कुछ दिन बाद जब आप बिल्कुल ही एक उस चीज़ को कह लें कि पूरे डिवोशन के साथ जो है वो करना जो है वो शुरू हो जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम जो है वो देना शुरू हो जाते हैं, तो समहाउ आपको जो आपके आसपास एनर्जीज होती हैं ना वो फील होती हैं। ये ऐसी जैसे आपको एक ठंडी हवा का झोंका जो है महसूस होना, इसी तरह आपको जो है वो फील जो है वो होता है कि हाँ आप जो है बैठे हुए हैं, आपको इत्मीनान महसूस हो रहा है, आपको अच्छा जो है वो फील हो रहा है। अभी उन्होंने बात जो की उसके साथ साथ अगर हम देखें, जो हमने जो वीडियोस देख रखी हैं, बहुत सारे लोगों को दर्शन भी जो है वो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में जो है उनको दर्शन, क्योंकि स्टोरीज जो है वो हमने जो है यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी जो है वो सुनी है। और ये हकीकत है, जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, तो एक स्टेज के बाद जो है ना ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि आपको वो चीज़ें जो है ना बड़ी रियलिस्टिक तरीके से महसूस होना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे जो उन्होंने बात की है वो ही मुझे जो समझ आई है वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग को दर्शन हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअली, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो एक हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उसके साथ साथ आपको वो चीज़ मतलब उसी तरीके से आपके अंदर और बाहर जो है वो एक जैसा होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं पर आप उस चीज़ को विटनेस करते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगी कि जो बीच में उन्होंने एक महिला की एग्जांपल दी, उन्होंने ये बात बोली ना कि मतलब उन्होंने कभी कोई टेंपल पहले विजिट नहीं किया था और कहीं पे दर्शन नहीं किए थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिर मतलब ऑब्वियसली कंप्लीट स्टोरी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी उनके सामने आया और उनकी लाइफ में चेंज हुआ, तो मुझे लगता है कि वो साइड जो है जानना वो भी मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई इंसान की ऐसी चीज़ होती है जो आपको ऊपर वाले से कनेक्ट रखती है और जिसकी बेस पर आपकी लाइफ में चेंजेस आती हैं। और जैसे उन्होंने मारुत शब्द का यूज़ किया, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सन ऑफ वायु हैं हनुमान जी, और मतलब अगर हम देखें तो जो हमारे अंदर मारुत है जो उन्होंने बोला, उसी से एक चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। और इनफैक्ट प्राणायाम को भी जिस तरीके से उन्होंने बताया, मुझे वो भी बड़ा मज़े का लगा, कि मतलब अच्छा लगा कि प्राणा मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं उनको कैसे, या मतलब कंट्रोल, हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो वाकई में जब आप चीज़ों को समझ कर और फिर आप उस सोच के साथ ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो मुझे लगता है ये चेंजेस लेकर आती है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे एग्जैक्टली हर चीज़ की जो है वो समझ आ गई है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो पार्ट हम लोगों को समझ नहीं आया, और अगर जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं उसमें भी हमें समझ नहीं आया और हम लोग खुद ही मतलब अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आपने प्लीज़ करेक्ट ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप जब एक एक शब्द को समझते हो ना, तो उसके बाद आप कोई और वीडियो देखते हो तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को बड़े अच्छे से समझ पाते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।